blessings message before we start the whole function. Yeah. So I'm honored to be part Dr. of Jack today. Lewin I'm from New sorry I York, can't be our there friend, in and he's person the this year, former but next CEO year I of promise I will be. very important foundation. He's a So part welcome of to the 18th IECR. IECR and the 4th Indo-European Conclave. I'm in New York City today, and I'm pleased to talk about post-COVID healthcare. Now, we all know a lot about post-COVID healthcare because we've been inundated with information. But I think maybe a brief review of where we are and where we may be going could be useful for all of us. So, and thanks also to Dr. Cripier for being a conclave advisor with me and a supporter of many years of this particular meeting. Well, 3 years into COVID, my first question to all of us is, why are we not applying what has been learned during this pandemic in a better way to our patients and to the future of public health? America was the worst affected in COVID, so he was talking about COVID also. The answer to that is that history repeats itself. If you look back to the scientific literature post-1918, people forgot about the fact that the world wasn't prepared and that there was a lot still to be learned. And so we are repeating ourselves in some ways. And, you know, the rich countries, and the Western rich countries in particular, were obviously not prepared for COVID. And yet we approached the whole thing with a kind of arrogance and I'd have to say ignorance. Maybe the better word is complacency, right? Because the reality is that South Korea, Taiwan, Japan did a much better job of mitigating the effects of COVID. And yet, you know, I think most of the public health leaders and officials in the United States, I'd have to say, had felt that these other countries had nothing to teach us. We thought we were so ready, and we weren't. So we all have to remember that with a great deal of humility, that we didn't collectively as world, but also the nations most economically privileged and theoretically ready to respond weren't the best responders. Now, we did all kind of panic in 2020. But when you think about it, we haven't seemed to have learned that much as we enter into 2022. I just want to mention one thing, for example. Look, I understand around the world, we all do, that there is, you know, a certain public fatigue with lockdowns and with masking and with social distancing, and this has all really been a problem for us from a public health point of view. But there's a bunch of mitigations we could take and that may not have a major effect. But one, which has received very little emphasis, is clean indoor air. This doesn't inhibit anybody's freedoms. It doesn't require social distancing. It doesn't necessarily require masking of any kind. But it is absolutely a powerful prevention strategy for the spread of infectious diseases in indoor environments. So let's think about that, because that's one area where all of our countries could make some big difference, working with architects and construction folks to really redo the indoor air worldwide in anticipation of the fact that there'll be another pandemic of some sort that will come our way. Next, I'd like to just sort of think about our perhaps complacency around long COVID. There have been a number of our physician colleagues that were actually in denial about long COVID, you know, thinking about it like long-term Lyme disease or some other kind of, or fibromyalgia or myalgia, or an issue that, you know, is more subjective and perhaps psychological than physical, but long COVID is real. And now, while vaccination reduces the risk of long COVID by 2/3, it doesn't reduce the risk completely. And so we're burdened with the long COVID problem. It's going to be an uncertain kind of long-term future for us to consider from a public health point of view. But we really need to be vigilant about it because we still have a lot to learn about long COVID. And we know that a third of people who, even if vaccinated, who were hospitalized and became seriously ill at some point
have significant organ dysfunction. And you got to remember back to, again, the flu epidemic of 1918. 15 years later, there seemed to be an enormous increase in Parkinson's disease, are symptomatic or asymptomatic, functioning on ECG, on echo, for us in terms of the impacts on artificial intelligence. So far, as something that happened during the pandemic, but that might decline a bit afterwards, but we'll find continued use for. And what we're seeing in the United States is it is going to be useful. Patients appreciate it. Patients find the convenience very, very gratifying and helpful. Dr. Junaid. And you know, once there's a relationship with the doctor and the patient, telemedicine can be an excellent way of following that patient up for chronic disease management. And now, because of remote patient monitoring and more sophisticated devices capable of measuring vital signs and other indicators and biomarkers of chronic disease, we can follow patients up with telemedicine and do a sophisticated job at home. And where do people want to be if they have a preference when they're sick? They'd rather be home than in a hospital or in a assisted care facility. So telemedicine is going to be here to stay. And then there's also a trend that clearly is going to come, and that's that ambulatory surgery centers and ambulatory cath labs are going to replace hospitals for many, many procedures because they're going to be safer, free of nosocomial infections by comparison, and because they're cheaper and more convenient for patients. So let's look to these changes, monitor them together, and share information internationally as we see what happens as we emerge from COVID and how cardiovascular care changes in the future. One thing we all should be focusing on, though, and not forgetting, is that historically we've tended to be, put wellness and health as a second kind of tier priority for us because we're so adept at treating, cardiovascular disease. Let's think more in terms of improving people's attitudes. There's been a mental health crisis of major proportions around the world. This is going to contribute to stress and cardiovascular disease. We need to recognize it, work on it, understand it, talk to our patients, and make sure they're doing okay. We need to encourage more exercise, and we need to improve nutrition. And finally, if we just improve medication adherence for those with serious cardiovascular diseases that are on life-saving medications, we could probably save 50% of the preventable mortality around the world. So adherence to medication is still important and something that we place too little emphasis on. Jack Levin talking and giving some messages to IECR. So now we have to start our valedictory function, which we are waiting. May I request somebody to escort Mr. D.P. Yadav ji on the stage. Somebody to escort my father onto the stage, Dr. M.L. Gupta, very senior physician from Lucknow. So what I am today is because of him. Somebody can escort Mr. D.P. Yadav ji onto stage. Madam Sanjana John ji, please. So this is actually a 20th edition of Indo-European Conference. May I request somebody, those who are sitting just in the back, please fill up this area. Come on this side. Just exactly on the back. Please come on this side, left side. It looks more. Can we connect this computer? Idhar aa jao. हाँ पापा. ये कनेक्ट हो गया? कनेक्ट हो गया ये?
You can really improve your fluency. I welcome everybody who is on the stage. We have a chief guest, is our Bhagwan Krishna, who is having blessings in front of us. This is a very special designed monument. बहुत special है, हम अपने घर से हमेशा लेते हैं. And I welcome Mr. D.P. Yadav ji, who is the former minister on the stage. Sandhya John ji, who is a fashion designer and very important celebrity on the stage. So I will just tell about historical perspective of Indo-European course on revascularization, and some messages I will play, and then I will request all of those who are present here to give some blessings on the speech, and then we'll have a cultural program. So historically, Indo-European course on revascularization started actually in 2008. In 2008, and we did a first program of first organizing a conference in Vigyan Bhavan. And that was a very important event. At that time, Chief Minister Sheila Dikshit ji was the chief guest in Vigyan Bhavan. And that was the first time that any conference was held in Vigyan Bhavan, especially the medical conference. Following that, we moved to London and we had a Paris conference. I'll show some pictures of that, or rather a video. Then we moved to Amsterdam, Rome, and Zurich. And then we have continuing to do every year. This is a video I will play only for 15 seconds, for you to understand the importance of this. This was actually done in 2009. Special meeting. It was actually gala dinner on Eiffel Tower. Dr. Alan Kibir, myself. Gala dinner between different style dances, but also there was initially the whole 2 days program of scientific program. You can see Paris in a very different light. Georges Pompidou Hospital, very important hospital in Paris. You can see the stylish hospital. Dr. Gatestone, Dr. Siri Sate, Dr. Lapo, and Dr. Fayaz Shah. Along with them, my friends, doctors from India. I invite you all to this very, very special meeting at George Pompidou Hospital. Needless to say, this is a wonderful place. And so briefly, this Dr. Anthony Lafont, there were a lot of programs, many lectures, many live sessions. First marginal. Patient was not interested, so we tried Dr. Sigward, Dr. Rajiv Bharadwaj from Shimla, many cases were discussed. Dr. Kribe talk. So this was historical. That means a very important part. And then we moved on to various cities in India, and especially Delhi. And we are going to do ahead next meeting in Andaman. So coming on to the 20th IECR meeting, since morning we have had about 20 lectures and 1 live inbox transmission and 5 through Zoom. And now I will play some messages which have come from various meetings. First of all, this is a message from Mr. Anu Malik ji. Anu Malik, who is a नमस्कार, मैं हूं अनु। मैं कुछ कहने से पहले हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर और सामने जो नजर आ रहे हैं मेरे फेवरेट क्या हो रहा है? Can somebody please stay here?
Can somebody stay here with me? नमस्कार, मैं हूं अन्नो मलिक। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं टू द इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव जो इस वक्त दिल्ली में हो रहा है। मैं कुछ कहने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक गुप्ता साहब, जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, मेरा दिल कहता है कि नमस्कार, मैं हूं अन्नो मलिक। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं टू द इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव जो इस वक्त दिल्ली में हो रहा है। मैं कुछ कहने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं हमारे दोस्त, VLC करो। नमस्कार, मैं हूं अन्नो मलिक। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं टू द इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव जो इस वक्त दिल्ली में हो रहा है। मैं कुछ कहने से ऑर्गेनाइज किया है। इस वक्त मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ये तो आप जानते ही हैं, और बड़ी इज्जत करता हूं आपकी। साथ साथ जितने भी वहाँ डॉक्टर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो न्योता आपने मुझे एक्सटेंड किया है आने के लिए, मैं आ नहीं सका बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं कुछ प्रायर कमिटमेंट्स में बहुत बिजी हूँ। मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, मराठी फिल्म है वो, मराठी फिल्म, और ये फिल्म बहुत ही अच्छी। जितने भी वहाँ लोग हैं, आप तो जानते हैं मैंने क्या क्या काम किया है ज़िंदगी में। बॉर्डर में मेरा म्यूजिक, संदेश से आते हैं गाने, आज भी चलते हैं। बॉर्डर हो, रेफ्यूज फिल्म सुई धागा विच इज़ द पेट प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा। उससे पहले मेरा गाना बहुत चला था, ये मोह मोह के धागे। और मैं ये भी जानता हूँ आप लोग मेरी स्पीच सुन रहे हैं और बोल रहे हैं अन्नो मलिक जी आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप हमें कुछ सुनाएंगे नहीं। ये लगता है मुझे विवेक गुप्ता जी वहाँ बुला रहे थे कि अन्नो मलिक वहाँ आते और गाना सुनाते। अब क्योंकि मेरी कमिटमेंट है तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन गाना जरूर सुनाऊंगा। तो सबसे पहले सुनाऊंगा मोह मोह के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मेरा क्लासिकल अंग है और मेरा मस्ती वाला अंग वो तो सुनाना पड़ेगा। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दरवाजा बंद है, तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। जरूर मुझसे ये एक किस्म की मुझे तकलीफ हो रही कि मैं आपके पास वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जब आप अगली बार मुझे बुलाएंगे, अप्रैल में शायद कॉन्क्लेव होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ आऊँ, आपसे मिलूँ, रूबरू बैठूँ आपके साथ और आपको सबको नमन करूँ। I wish you all the best and have a very very great evening. Thank you. Namaskar. This is the next European conference. हेलो, आप आए नहीं अब तक? यूरोपियन कॉन्फ्रेंस का जो निमंत्रण है, ये निमंत्रण विवेक गुप्ता जी के मार्फत मुझे मिला था और उन्होंने 30 तारीख को मुझे वहाँ आने का आग्रह किया था, लेकिन मेरे दूसरे प्रोग्राम होने के कारण मैं नहीं वहाँ अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, विवेक गुप्ता जी ने अभी तक 10-12 हज़ार से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो उन्होंने किए हैं। और इंडो यूरोपियन हार्ट कॉन्फ्रेंस जो है, ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें लंदन है, पेरिस है, आम्स्टरडम है
ऐसे कई देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें आ रहे हैं और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती थी अगर मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था तो। लेकिन ये डेट थोड़ी सी आगे पीछे होने से मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और कॉन्फ्रेंस में जो भी सभी अटेंडेंट जो आ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ एज ए सोशल एम्पावरमेंट MOS के नाते। और मैं सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। This was Honorable Minister Mr. Ramdas Athavale ji, who was supposed to come but he could not come 30th December. We have a very important Swami Gyananand ji, who is everybody knows Gita is being shown by him. और ये कुरुक्षेत्र में है, ये शायद आप लोग जानते होंगे सब लोग अपनी इनको। भारतीय इन्होंने एक विधाओं में भेजा है मुझे अभी। डायलॉग्स को, आपसी संवाद को, आपसी विचार विमर्श को बहुत महत्व दिया गया है। भगवद गीता में परस्परम भावयन्तः बोधयन्तः परस्परम ऐसे अनेक भाव आए। बोधयन्ता अर्थात किसी भी क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी क्षेत्र के जो लीडिंग जो पर्सन्स हैं, जब वो आपस में बैठते हैं तो कोई नई प्रेरणाएं निकलती हैं। हमें प्रसन्नता है कि यहाँ दिल्ली में इस समय इंडो यूरोपियन कोर्स ऑन कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस चल रही है। इससे पूर्व भी 2008 से ये कई स्थानों पर, लंदन में, पेरिस में, रोम में, स्विट्ज़रलैंड में, ऐसे एम्स्टर्डम में, ऐसे कई स्थानों पर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। वस्तुतः ये कॉन्फ्रेंसेस कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छे सॉल्यूशन लेकर आएगी, ये हमें विश्वास है। ये कॉन्फ्रेंस इस प्रकार की किस नई कुछ इंस्पायरेशन, नई रिसर्च सामने लाएगी। और जब जब कुछ प्रबुद्ध लोग मिलते हैं, और यहाँ तो यूरोप के, भारत के और अमेरिका के कई लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ एकत्रित हैं, जो आपस में कुछ समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स पर, कुछ सॉल्यूशन पर कुछ विचार कर रहे हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना इस कॉन्फ्रेंस के लिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर चिन्मय गुप्ता और डॉक्टर राखी गुप्ता, फ्रांस के प्रोफेसर एलन क्रिबियर और USA के डॉक्टर जैक लेविन, आप सब यहाँ एकत्रित हैं। सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और एक संकेत के साथ कि भगवद गीता भी क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य में ऐसे कई संकेत करती है कि हृदय की दुर्बलता छोड़ो, हृदय को मजबूत बनाओ, विचारों को मजबूत बनाओ। तो जब भगवद गीता को भी हम थोड़ा साथ लेंगे तो हमारे शोध, हमारे चिंतन को और एक अच्छी दिशा मिलेगी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति। मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहता हूँ, हम लोग को सबको पता नहीं है इनके बारे में। मैं स्वामी ज्ञानानंद जी, और बेटर नोन एज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इज एन इंडियन महामंडलेश्वर सेंट who is known for his research as Bhagavad Gita and a famous Gita speaker. He has interpreted the Gita and inspired many professionals globally. He is also a Hindu philosopher and a social worker. He is the founder of an organization that follows Vaishnavism called Shri Krishna Kripa Seva Samiti. He has also founded another organization called Geo Gita to promote Bhagavad Gita. Recently we had a program in Vigyan Bhavan where Adharaniya Mohan Bhagwat ji also participated, and that was for Gita. So he is also known as Gita Manishi Swami Sri Gyananand Maharaj ji. He has done MA in political science. Later he had become his adherent students in his Gurudev Swami Gitanand, from where he attained philosophical interpretation of Gita. He is a devotee of Lord Krishna and considered him as Almighty. He is all well versed in Gita after practicing meditation and other yoga practitioner under his Guru Swami Gitanand ji. He founded an organization called Shri Krishna Kripa Dham. He conceptualized various writings that are chanted by many Lord Krishna followers to please them. Shri Krishna Kripa Amit, Gita Gyan, Bhajan Mala, Gyan. A celebrated, renowned and respected Guru Swami Gyananand is well liked for his extraordinary contribution
with a desire to spread Gita and create a free word. Swamiji has always bestowed his service to the word through his enlightenment. He's utilizing the word and he's living in Kurukshetra, जहाँ पे गीता का ज्ञान हुआ था. और अभी 23 दिसंबर को इज़ अ गीता डे एक्चुअली. उस दिन भगवान कृष्ण का माना जाता है कि उन्होंने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था. उस दिन सेलिब्रेट किया था इन्होंने वहाँ पे कुरुक्षेत्र में. नेक्स्ट वी ऑल गो ऑन टू आवर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज Dr. Bipin Puri. He was supposed Dear to friends, esteemed delegates from across the globe, He's the Director of Medical Services of I Apollo extend Hospital, on Indraprastha. behalf of the Indraprastha Apollo Hospital, a very, very warm welcome to all of you, though I know this is the valedictory function. But I'm pleased to note that this European course on revascularization of the myocardium, this conference is being organized by Professor Vivek Gupta from Indraprastha Apollo Hospital and Dr. Alan Cribier from France since way back in 2008. And this year again, we are now holding this 20th edition of this conference, this IECR, and our dynamic Professor Vivek Gupta from Indraprastha Apollo Hospital and of course Dr. Alan Cribier are here once again to make this feasible. And I'm very glad that this time it's happening in Delhi at the new Maharashtra Southern at Kasturba Gandhi Marg at Delhi. Well, friends, I have also been told that this same conference has been conducted in various places across the globe, at London, at Paris, Amsterdam, Rome, Switzerland, and many more places in the past 2 decades. I am very delighted to know that this conference has a huge amount of an academic feast, and there are very eminent cardiologists from across the world who are here to discuss contemporary issues and talk about this cutting-edge technology as it's come into cardiac sciences as well. I was going through the academic program. I was absolutely delighted that some of the topics are so contemporary. Accordingly, of course, CAD with diabetes, which continues to be the single most important risk factor for cardiac disease, and how to take therapeutics from diagnostics to therapeutics, from bench to bedside. And I think those are some of the challenges which are perceived by clinicians across the world. The Director of Medical 2D Services of eco imaging Indraprastha Apollo, in congenital heart disease, Dr. how Bipin Puri, it is Lieutenant General, revolutionizing retired. management protocols, use of AI in coronary arterial disease and in cardiovascular disease. Now these are emerging, evolving technologies which promise to change the face of management protocols, algorithms, templates in the times to come. Use of artificial heart and heart transplantation. Recently, friends, ladies and gentlemen, we had a 2-year-old child who was put on a Berlin's heart and was subsequently underwent a successful cardiac transplantation, which I assume must have been discussed in this conference. And the use, of course, congestive heart failure and the Mitra clip. Those are some of the very interesting discussion points I saw in the program. I wish once again all of you, all the delegates, a great academic feast. I extend my best wishes to the organizing team, Professor Vivek Gupta, and also Dr. Chinmay Gupta, Dr. Rakhi Gupta, Professor Alan Cribier from France, and Dr. Jack Levin from the US for organizing and bringing this conference to a reality. Once again, with all my good wishes from the Indraprastha Apollo Hospital, thank you and Jai Hind. blessing message from Member of Parliament, Madam Rita Bhagna ji. प्रिय मित्रों, मुझे पता चला है कि इंडो यूरोपियन कोर्स ऑन कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 2008 से फ्रांस के प्रोफेसर एलन क्रेबियर और भारत के प्रोफेसर विवेक गुप्ता
के द्वारा किया जा रहा है। मुझे यह भी पता चला है कि ICR का आयोजन पहले लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, रोम और स्विट्जरलैंड के विश्वविद्यालयों में किया जा चुका है। इस वर्ष IECR सम्मेलन का 20वां संस्करण आज 30 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इस सम्मेलन में यूरोपीय देशों के, संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर चिकित्सकों और हृदय रोग विशेषज्ञों के लिए उपयोगी कई कार्डियोलॉजी विषयों पर चर्चा भी की गई है और की जाएगी। मुझे सम्मेलन के आयोजन के लिए आयोजकों डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, डॉक्टर राखी गुप्ता और फ्रांस के प्रोफेसर एलन क्रिबियर और USA से डॉक्टर जैन लेविन को शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि इससे डॉक्टरों की नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो हृदय रोगियों के लिए उपचार की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने वाले स्वास्थ्य लाभ में सुधार करेगा। आप सबको आने के लिए बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शी इज़ माई ग्रैंड डॉटर। वो देख के बड़ी एक्साइट हो रही है, ओनली 1.5 ईयर ओल्ड बच्ची जो है, इसको मज़ा आ रहा है पापा वो देख के कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द लास्ट ब्लेसिंग्स एंड देन वी हैव टू हैव लाइव। नमस्कार, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि मिस्टर कैलाश विजयवर्गीय फ्रॉम में कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, वो 2008 से इंडो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ प्रमुख डॉक्टरों के साथ मिलकर कार्डियोलॉजी के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2008 से लगातार चल रही है। मुझे भी निमंत्रण मिला था, किंतु मैं व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए डॉक्टर सीखें और आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियाँ उसको समझकर अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता को सिद्ध करें। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Okay, so now we move on to live sessions with the people who are present here. May I request, I think we can start a blessing message from Sanjana John ji. And please come on the stage and speak something about yourself also. What you are doing a lot of work yourself, other than what your celebrity status as a fashion designer and other things. What all else you are doing, and something what you want to speak. Madam Sanjana John, आप अपने बारे में। That's fine. Good evening, everybody. It's such a pleasure. Thank you, Dr. Vivek Gupta and family. I think मुझे सबसे ज़्यादा ये कहना ज़रूरत लगती, क्योंकि मैं फैशन और मेडिसिन में क्या मिलता आप सोच रहे होंगे। हम सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, and I represent a body from the US called Friends for Good Health, which is headed by Dr. Kaloti. We do social service and health camps globally in areas that are in need. And one of the most important things was during COVID, we got hundreds of concentrators and we were able to do COVID-free rural India in the villages. Actually, Bensi, Beniani, Rajasthan में कई गाँवों में हम जाके सबसे ज़्यादा concentrators हम लगने का कोशिश किया, and COVID-free rural India का project हमने किया. So even though हम लोग entertainment में हैं, I'm a filmmaker and in fashion, music and entertainment, I try to do social work through entertainment. And currently I'm making a movie, H2O Movement. The movement is about water, walk for water, walk for life. So pan-India, from Dehradun to Saharanpur to Chandigarh, we've been marching with 50,000 students, 60,000 students to make people understand the value of water. And most importantly, what Dr. Gupta is doing is bringing the world of health to India. I think COVID taught us all the importance of health. Jitna bhi wealth ho, agar aapke paas health nahi ho, all that wealth means nothing. So we are here to educate people, to make them understand
the value and integrity of a doctor and the need for the doctor to be imparting the knowledge of wealth. So with that, I thank all the amazing doctors out here who give their lives to support all of us and keep us healthy. And of course, thank you, doctor. What's the name of the film you said? The movie is H2O movement. H2O is water. OM movement, H2O movement. It's about the world's largest democracy, which is India, and the world's richest democracy, the US, and both having the same problem, water. And as you know, the next war for the world is water, so we are trying to make sure that India stands strong and we never have a shortage of water. And once again, thank you, Dr. Gupta, for making us healthy and making sure that we all stay healthy. Thank you, everyone. Jai Hind. Thank you, Sanjana ji. आपने short notice पे आप दिल्ली में थी. Otherwise, you keep traveling to America quite often, and I'm thankful to you that you could make it. And before I go on to our special guest of honor, Mr. D.P. Singh ji, मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द हमारे पापा डॉक्टर एम.एल. गुप्ता भी बोलें. यहीं पे. So actually, let me introduce him for the people who are new audience here. D.P. यादव जी तो जानते हैं, पहले भी मुलाकात पापा से है. हमारे फादर डॉक्टर एम.एल. गुप्ता, मदन लाल गुप्ता, actually basically from Baha, which is Agra. In 1955, he migrated to Lucknow for doing his MBBS. 1955. At that time, King George Medical College was still a famous college. King George Medical College is older than AIIMS in Delhi. 1911. I don't know why अंग्रेजों ने क्यों चुना लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बनाया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई. तो 1955 से 1960, and that's why I was born in Lucknow. And then he became faculty. He joined medicine and then joined pharmacology. And he did a lot of research in pharmacology. More than 150 publications at that time. There was no internet. You have to send the publications by post, receive the publication by post, whether it is accepted or not, then review and send it back by post. And that was the time I've seen, and not, there was no computer. Typist, वो होता था, हम इनका नाम भी याद है, मिस्टर राजेंद्र, जो टाइप करता था. मैंने स्क्रिप्ट रिसर्च करी माइस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिसके बारे में पापा बोलेंगे वो अश्वगंधा पे है, लेकिन he has done lot of research on pituitary hormones. He is still cited quite widely. If you Google him, there are a lot of publications are being still cited, Gupta et al. Even today, its citations are huge. He has been exceptionally good orator. He has, जब हम MBBS कर रहे थे तो he was my teacher. तो वो पढ़ाते थे तो हमको बड़ा शर्म आती थी in front of 180 people. I was also one of the students, 1985, 86, 87. My sister also graduated there, 1 year junior to me. And my brother who is standing here is by chance a default engineer, but he's doing very well software engineering. So this is our family, but I am really thankful to God Almighty that I have been blessed with a father or with like him, because the amount of research, not only research is, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे फादर में जो हम में भी नहीं है, वो एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं, उनको कथास्त याद हो जाता है, एक बार ही पढ़ के. अगर पढ़ लिया तो उनको पूरा याद होगा. And he will remember it for almost till today. So this is the brain which is I don't have. I need to read many times, and you tend to forget, but he does not forget. So the thing, he never went to politics. Otherwise, he would have been very successful. But politics is a different field altogether. Researcher, scientist के लिए politics नहीं है. Other than that, he has done a lot of clinical practice. I still remember morning, evening, जो clinical practice करते थे. Being a pharmacologist, he was doing exceptionally well, seeing at least 30 to 40 patients in the morning and 30 to 40 patients in the evening. It's not easy. So I just hand over. पापा आप अश्वगंधा के बारे में बताइए. अश्वगंधा के बारे में. अश्वगंधा आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण दवा है. बाजार में इसे वृद्धावस्था का टॉनिक के नाम से जाना जाता. इसकी जड़ का पाउडर, चूर्ण, ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए टॉनिक. लेकिन हम लोगों ने सोचा कि वृद्धावस्था में इस्तेमाल करने का मतलब यह है
कि हो सकता है कि वृद्धावस्था में जो लोगों को कैंसर हो जाता है, हो सकता है ये दवा कैंसर को रोकने में सक्षम हो। तो हमने इसको कैंसर रोकने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। तो छोटे चूहे माउस कहते हैं माइस, उसमें हमने लंग में कैंसर प्रोड्यूस किया। ड्यूरीथेन दवा आती है, उसको देने से माइस में लंग कैंसर हो जाता। उनमें हमने कुछ माइस में यूरिथेन दिया, कुछ माइस में यूरिथेन के साथ अश्वगंधा का पाउडर दिया, कुछ माइस में केवल अश्वगंधा दिया और कुछ माइस को ऐसे ही छोड़ दिया। इस तरह से 4 ग्रुप बनाए। हमने देखा कि जिन माइस में हमने अश्वगंधा और यूरिथेन दोनों दिया था, उसमें लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ, और जिनमें सिर्फ यूरिथेन दिया था उसमें लंग कैंसर 100% डेवलप हो गया। इससे साबित हो गया ये दवा जो है लंग में कैंसर रोकने में सक्षम है। ये रिसर्च हमने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रूड ड्रग रिसर्च जो हॉलैंड से पब्लिश होती है उसमें पब्लिश किया था, और इसलिए बहुत ही वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी है। बहुत करीब करीब अभी भी 40-50 साल के बाद भी, ये मैंने 1968 में पब्लिश किया था, और आज भी इसकी जो है साइटेशंस तमाम जर्नल्स में आते हैं, रिसर्च पेपर्स में आते हैं। तो मेरा विचार ये है, ये अश्वगंधा की जड़ का पाउडर हर वृद्धावस्था में जिनको खास करके जिनको कैंसर होने की संभावना है, जैसे हैवी स्मोकर्स, पान मसाला खाने वाले, और बहुत से लोग शराब पीते हैं, उनको लिवर कैंसर हो जाता है उनको, और महिलाओं को जिनको यूट्रस का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, इन्हीं सभी लोगों को अश्वगंधा रेगुलरली लेना चाहिए। इसके अलावा हर वृद्ध आदमी को, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, बहुत कम डोज में यानी 500 मिलीग्राम अश्वगंधा आधा चम्मच से भी कम, चौथाई चम्मच शहद के साथ मिला करके सुबह एक बार रोज लेने से उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और कैंसर की संभावना भी नहीं रहेगी। ये हर एक आदमी को प्रयोग करना चाहिए। खास करके मैं भी खुद प्रयोग करता हूँ। मेरी उम्र इस समय 88+ है और मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं है सिवाय कान और आँख की, लेकिन ये तो एज रिलेटेड है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। One more thing which I want to highlight is that my father and father-in-law both were pharmacologists in the same department and very close friends. So the marriage was held because they were together, and I can see my mother-in-law, who is by chance from Lucknow, sitting here. She's sitting in the blue sari, और मेरी mother भी बैठी हैं लाल साड़ी में. So blessing of parents are more important than God. I personally feel sometime, but of course God is God. लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े, तो गुरु तो पेरेंट्स ही है ना, गोविंद गोविंद है, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो ये बहुत बड़ी पुरानी बात है, कबीर का दोहा है, किसका है ये? तो इसीलिए पेरेंट्स आर ब्लेसिंग्स एज मच एज पॉसिबल। आप लोग भी देखिएगा, पेरेंट्स की ब्लेसिंग जितना आप ले सकिए उतना अच्छा है। He wanted to show this thing, then we will hand over the mic to most important special guest of honor, Mr. D.P. यादव जी। उनका परिचय आप कराएंगे या आप खुद ही करेंगे? नहीं, I wanted to show one Google scholar, my brother wanted to show
हमारे फादर का जो So I always wonder, मैंने कहा पापा अगर आप तो हम लोग डॉक्टर ना होके बिजनेस कर रहे होते या हम पैदा ही नहीं होते. दिस इज ऑल डेस्टिनी बिकॉज हमारी वाइफ कोई और होती. मतलब आई मीन इट्स ऑल गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग है. संजय जी और ये बताएंगे कि कैसे भगवान ने आपको किस समय. अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. खोल दिया आपने. तो दिस इज जस्ट कैन यू शो दिस. इसको आप हाईलाइट कर दीजिए. Citations. This is available on Google. Because anybody can Google Dr. Vivek Gupta and there is a page. नीचे जाओ. All these research papers, कहाँ का कितने citation हुए हैं, कहाँ पे हुआ है, ये आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. और उस समय की रिसर्च है जब इंटरनेट था नहीं. कंप्यूटर research papers 1971 show more. So this is how actual research आजकल खत्म हो गई है. भाई साहब, I personally feel कि जो रिसर्च उतनी रिसर्च अब ये बेसिक साइंस रिसर्च इंडिया में नहीं है उतनी. क्लिनिकल रिसर्च हम लोग करते हैं बट बेसिक साइंस रिसर्च है. अश्वगंधा, मैंने रामदेव जी से एक बार कहा कि आपने अश्वगंधा का इस्तेमाल किया कोरोनिल टैबलेट में. तो हमने कहा वो तो हमारे पापा की ओरिजिनल रिसर्च है कि अच्छा हम मुलाकात करेंगे. हमने कहा तब पेटेंट होता नहीं था तो कोई पेटेंट तो किया नहीं. लेकिन आप देखेंगे अश्वगंधा रिसर्च वो पब्लिकेशन है. Prevention of cancer, and he has very rightly said, I think we should all start, who knows who has cancer. You never know. At least one cancer proven. माइस में कि इनको कैंसर नहीं हुआ, उनको हुआ, माइस में proven है. We should start taking ashwagandha every day. Now I have a great privilege to, will honor him later on, but I would hand over the microphone to listen to his blessings for this conference and for us. Mr. D.P. Yadav ji. मेडिकल वर्ल्ड के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, उनके सम्मानित पिताजी डॉक्टर एम.एल. गुप्ता जी, उनके बेटे चिन्मय जी, यहाँ पर मौजूद सभी चिकित्सक, मेडिकल सब्जेक्ट से संबंधित सम्मानित लोगों. दोस्तों, हमारे पास मेडिकल की डिग्री तो नहीं है, लेकिन सेवा भाव ज़रूर हम लोग भी करते हैं. बल्कि इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टर को दूसरे भगवान के रूप में जाना जाता है. यानी अपनी सेवाओं के साथ और दूसरों को, हालांकि ज़िंदगी तो देने वाला भगवान ही होता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जितना बड़ा योगदान हमारे चिकित्सक वर्ग और डॉक्टर्स का रहता है, उतना योगदान शायद आदमी का खुद भी नहीं रहता. तो ऐसे आयोजन, जो समारोह डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने, उनके साथियों ने यहाँ किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. हमारे नौजवान साथी भाई विजय सिंह, जो विधायक भी हैं, एमएलए भी हैं, और आर.एन. यादव साहब जो जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ. कहना सिर्फ ये जानता हूँ कि जिसके सीने में गरीबों का वो दर्द, वो तकलीफ़ जो इंसानियत को हमेशा परवरिश देती रहती है, उसके लिए सबसे अग्रणी भूमिका में अगर कोई सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं तो डॉक्टर्स लोग हैं. यानी चाहे सीमाओं के प्रहरी और सीमाओं पर खड़े हुए सैनिक और बलिदान देने वाले लोग हों, और चाहे आम जिंदगी में, और चाहे खेतों में अन्नदाता बनकर के किसान जो हमको खाने की चीज़ें और अन्न मुहैया कराता है वो हों, सभी जगह डॉक्टर्स लोगों की अपनी एक जगह है. और सम्मानित लोगों के साथ में, उनके हृदय की भावनाओं के साथ हमेशा इस देश ही नहीं, दुनिया के लोग सम्मान के तौर पे डॉक्टर्स लोगों को देखते हैं. मैं ज़्यादा ना कहते हुए, अश्वगंधा जी के बारे में डॉक्टर साहब के पिताजी ने
जो आपके सामने बातें रखी। मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ भी कुछ ऐसी बातें जानने का और दूसरे स्कूल कॉलेजों में जानने का मौका हम लोगों को मिलता रहता है। मैं समझता हूँ अश्वगंधा के बारे में जो बात डॉक्टर साहब गुप्ता जी ने आप लोगों को बताई, तो आप लोग तो हमसे सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपके अनुभव भी हम तमाम लोगों से ज़्यादा हैं, तो ज़रूर आपको भी इस विषय में मालूम होगा। लेकिन आयुर्वेदिक और जो भी इस देश की धरती में पैदा होने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, उनसे भी आज पूरी दुनिया में आदमी को स्वस्थ रखने का काम किया जाता है। और समय समय पर डॉक्टर विवेक गुप्ता जैसे डॉक्टर, उनके साथी और दोस्त जो समय समय पर पथ प्रदर्शन लोगों का करते रहते हैं, वास्तव में ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं। भगवान करे ये अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए देश के दूसरे लोगों के भी स्वास्थ्य की रक्षा करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much for the very kind words. आप लोग काफ़ी लोग नहीं भी आ पाए हैं इसमें, जो हम लोग गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे। तो अब मैं सम्मानित करने का जो छोटा सा फंक्शन है वो शुरू करना चाहता हूँ। कैन वी हैव द शॉल पापा के हाथ? कुन्नू, कैन यू हेल्प? उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा एक कल्चरल इवनिंग 10-15-20 मिनट की आप सुन के जाएंगे। पापा के हाथ करो। आइए सर, थोड़ा इसको इधर खिसका देंगे, जल्दी थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसको। पापा शॉल पहना दीजिए पापा। अरे इससे तो और खुशी होती पापा को भी ना। एक वीडियो। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा डीपी यादव जी, संजय जी, जॉन जी को शॉल पहना के इनको सम्मानित करें। शॉल दे रहे हो बेटा। एक शॉल और देना। मैं चाहूँगा पापा को आप हाँ अब आप एक शॉल और लाइए जरा। हाँ, इनका परिचय दीजिए पूरा। विजय जी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से एमएलए हैं और डॉक्टर साहब उनको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं भी उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त यहाँ पे आप प्रशांत तिवारी जी आप हैं। आप मैं आपको ट्रॉफी नहीं दे पाया, सुबह नहीं आ पाए। एक इनको अगर करिए, तिवारी जी जो है इस पार्ट ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस, पार्ट ऑफ पायनियर। आप तुम्हारे पूरा बताइए जरा, थोड़ा सा बताइए। मुझे बोलना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम होस्ट करा और हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे प्रोग्राम लगातार होस्ट करते रहें। डॉक्टर्स के बारे में जैसे आपके गेस्ट ने कहा था कि एक भगवान का रूप होते हैं,
तो हम लोग भी यही मानते हैं, जब तकलीफ़ होती तभी याद आता है कि भगवान है। तो आज वैसे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। He is a part of pioneer group of printing and a very prominent media person. Thank you. So what we can now do is I would like to just play one last song as a part of it, tribute to my friend and patient also. आखिरी गाना राजू श्रीवास्तव जी का मैं सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दिल से उनसे प्यार था और वो नहीं है हमारे सामने। यूट्यूब लगाना कहाँ इसमें यूट्यूब है। तो आई ऑलवेज प्ले दिस इज द सॉन्ग विच ही प्लेड 2 days बिफोर हिज हार्ट अटैक। सो ही केम टू माई हाउस। ये सीखने का है कि भाई अपने स्वास्थ्य का दिमाग ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं। इनको पहले 7 स्टैंड लगे हुए थे, बट ही नेवर। हमारे घर में 11:30 बजे तक रात को बैठ के गाना गाया, खाना खाया, लेकिन हमने कहा चेकअप होता रहेगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा खा रहे हैं। उनको कोई सिम्टम आए थे पहले, ही इग्नोर्ड सिम्टम। तो नेवर इग्नोर, डॉक्टर इसरानी विल एग्री एंड डॉक्टर पोदार, ऑल दिस पीपल विल एग्री दैट नेवर इग्नोर योर कार्डियक सिम्टम्स। तो ही हैड सम सिम्टम। इनकी वाइफ ने कहा डॉक्टर साहब घर जा रहे हो खाना खाने, फॉर नो रीज़न, इट वॉज जस्ट ए प्लेजर ट्रिप। बॉम्बे से आते तो हमारे घर में खाना खाते थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बाद में, सब कुछ बाद में, जबकि हमारे चैम्बर है। इफ़ ही हैड रियली कंसल्टेड मी जस्ट फॉर कि हमारा हल्का अंजाना हुआ है तो इनका जिम बंद करा देता मैं। ही वॉज एग्रेसिव जिम एंड ही डाइड ड्यूरिंग जिम ओनली। लेकिन इनका गाना सुन के हम, क्योंकि ही वॉज ए गुड सिंगर ऑल्सो। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको माय रेजिडेंस इन सरिता विहार। लोग कहते अंजाम क्या होगा। अरे मुफ्त में हो जाएंगे तो बदनाम क्या होगा। घर से निकल के रास्ते पे चल के ताने हजार सहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो रब जाने। अरे उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हैं, हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। क्या बात है आपको। If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard it सुनाता हूँ, जो कि इनके हमारे साथ में इनका एक और वीडियो तो बहुत है, लेकिन मैं एक और सुना चाहता कि इनकी कॉमेडी का एक है जो ये हमारे बेटे की शादी हुई, हमारे बेटे की शादी कोरोना काल में हुई चिन्मय। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया 2 घंटा पहले, कैन यू सेंड मी ए वीडियो मैसेज। तो उनके वीडियो मैसेज में भी कितना एक सेल्फ मेड कॉमेडी पर्सन। देखिए ये हाय नमस्कार, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। सबसे पहले तो चिन्मय और पूजा जो विवाह कर रहे हैं, तो इस अवसर पर मेरी ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखिए ये शादी का जो बंधन होता है, विवाह बड़ा खुशहाल रिश्ता होता है और इसमें खुशहाली बहुत है। बस शुरू के 40-45 साल थोड़ा संभालने पड़ते हैं बस।
उसके बाद तो मजा ही मजा। विवेक जी, आप इस जिम्मेदारी से अब मुक्त हो गए, सारी जिम्मेदारियों से आप फ्री हो गए हो। अब आप बाकी की जिंदगी बैंकॉक में निकालोगे। So he was a man, a wonderful person, comedy, इनके दिमाग में रहती थी, self-made. So thank you very much. I think we can now wind up this program. Let me see if किसी और की speech रह ना गई हो, because I don't think so. स्वामी ज्ञानानंद जी की हो गया, अनुमलिक जी का हो गया, ठीक है. I wanted to show one more video, but I think time is not there. ये एक मैं वीडियो 2 मिनट का दिखाना चाहता हूँ कि हाउ डू वी रियली वर्क, जो हम लोग रात को भी एंजियोप्लास्टी करते हैं. 25 साल का लड़का हार्ट अटैक का आता है और रात को 1 बजे मैंने ये प्रोसीजर किया. ब्लड होता नहीं है. जो हार्ट अटैक होता है तो उसके अंदर नस के अंदर 100% आर्टरी बंद होती है. प्रशांत यू एग्री? डॉक्टर चिन्मय, फॉर लॉन्ग टाइम है. अटैक में क्लॉट होता है, हार्ट अटैक में क्लॉट होता है. शो माय फेस. हार्ट अटैक में क्लॉट होता है, जो क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक होता है. तो ये क्लॉट जो सफेद सफेद है वो क्लॉट है. अगर थोड़ी सी भी थोड़ा देर करेंगे तो हो सकता है ये क्लॉट इसमें चला जाए, तो ये पूरी आर्टरी बंद हो जाएगी. पेशेंट विल हैव सीरियस कार्डियक अरेस्ट. So this is a problem, and we were very apprehensive, and we told the family that this is a very challenging case. With the help of Basant and Prashant and Dr. Chinmay, we have done a good job. I will show you how. So the first thing is to put a guiding catheter. उसको हमने चेक किया, यहाँ पे पूरा क्लॉट भरा हुआ है. Keep showing the next shots. Keep showing. Right coronary artery, जो left dominant system में और challenge हो जाता है. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Right is normal. Right is normal, but it is a non-dominant artery. Non-dominant artery मतलब ये होता है कि लेफ्ट आर्टरी से सारी सप्लाई हो रही हो. अब इसमें हमको एंजियोप्लास्टी करनी है. क्लॉट इज हैंगिंग जस्ट एट द ओरिजिन ऑफ अनदर आर्टरी. अगर ये क्लॉट थोड़ा सा इधर किया, पेशेंट विल हैव सडन कार्डियक अरेस्ट, एंड नोबडी कैन डू इन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द गॉड. नोबडी कैन डू एनीथिंग. गॉड इज फाइनल. चलो आगे हमने we do a very good job, and we put a stent to the line. Sometimes we are lucky to do such wonderful things and try to help the patient. 25-year-old, 23-year-old man who came with a large heart attack in the middle of night, 1 a.m. Now I wanted to invite him here, but he could not. I don't know. I had no time to call him. He's doing very well, 3 years. तो मैं उससे कहता हूँ कि 18 दिसंबर आई थी रिमेंबर, हमने कहा कि तुम्हारी दूसरी 2 बर्थडे मनाया करो. एक बर्थडे रेगुलर वाले हो, एक जिस दिन ये एंजियोप्लास्टी हुई. हिज हार्ट फंक्शंस आर ओके. तो हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं वो लकी है तो सही जगह पहुंच जाते हैं. अदरवाइज 50% हार्ट अटैक पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल because of the cardiac arrest they can have, and we have seen lot of such things, especially after COVID. So we have to take care of our heart and health. Prevention के लिए बाद में बात करेंगे. So this is the time for enjoyment, and I request all the guests of honors to come on this side so that we can start having a small cultural program of singing, and then we'll have a dinner after a while. पापा को इधर बैठा दो. Can we have the instruments people to come? आप हमारे एक दोस्त हैं, एक पहला गाना शुरू करेंगे. आइए. Please, have you got everything? Mr. Sachin. So he will start singing the first song, and then we will have instruments, and then 1 or 2 more songs, and then we'll try to wind up. Yes.